We live in a society where credit of success is taken by the system, the institution, whereas the blame of failure is often imposed upon the individual. Hello and welcome to the channel. As prelims results have been declared few days back, congratulations to those of you who have made it into the list. This video is not for the people who have made it into the list, rather it is for the rest of the people. आई नो पास्ट फ्यू डेज आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहे होंगे, आपका सारा हार्ड वर्क, यू फील लाइक एक सेंस ऑफ फेलियर आता है कि जो भी हमने हार्ड वर्क करा, टाइम दिया, सारा वेन में जाता हुआ फील होता है. ऑल राइट, सो आज हम एक नए पर्सपेक्टिव से अपने इस रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे. आई फील वेरी डिफरेंटली अबाउट हाउ वी सी फेलियर्स. आई हैव ट्राइड टू पुट दैट इन टू वर्ड्स. आई कैन अश्योर यू दैट आपका अपने फेलियर्स को देखने का, जिसको हम फेलियर्स कहती है, हमारी सोसाइटी फेलियर कहती है, उसको फेलियर्स को देखने का नज़रिया आपका बदल जाएगा. दीज आर द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. विल सी थ्रू वेरियस थ्योरीज. सोशल कंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, लुकिंग ग्लास थ्योरी है. इट इज़ दीज आर वेरी रिलेटेबल थ्योरीज. इफ यू सी, वी विल डिस्कस दैट. बट बिफोर दैट, लेट मी आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. डू यू डाउट योर सेल्फ फॉर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट? क्या आप अपने आप को अनवर्दी फील करते हो? डू यू सी योर सेल्फ एज अ फेल्ड पर्सन? इफ दीज आर द केस, डोंट वरी, वॉच दिस वीडियो. आई कैन बेट अपॉन दिस दैट योर पर्सपेक्टिव ऑन हाउ यू सी योर फेलियर्स इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली. लेट्स गेट गोइंग. आई विल शो यू 3 फोटोज. आपको करना क्या है, जस्ट टेक ए पॉज. आप तीनों फोटो से ना कुछ एक इंटरलिंकेज निकालो, हमारी जर्नी में क्या कैसे हम इंटरलिंक कर सकते हैं. ऑल राइट, अभी आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो 10 सेकेंड के लिए. एंड ये 3 फोटोज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ. पहली है जो अभी हमने रिसेंटली, हमारी टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप विन मिली है हमें T20 वर्ल्ड कप में. सेकेंड इज़ जर्नी ऑफ राहुल द्रविड़ सर. एंड थर्ड इज़ जर्नी ऑफ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम. वी विल गेट बैक ऑन दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो. तब तक आप खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो अपने माइंड में. ऑल राइट. There's very famous theory of social construction given by Berger and Thomas Luckman-Chow. It says that we act based upon certain understanding of reality. हम जो भी act करते हैं, it is based on our understanding of some reality. But that reality is shaped by our society. That means जो रियलिटी हमें बहुत ऑब्जेक्टिव लगती है, यूनिवर्सल लगती है, फॉर एग्जाम्पल कि जो रियलिटी है वो रियलिटी है in absolute terms, but that is not absolute if you see. Why? For example, it has been a created common sense by society that if you want to crack exam, you have to work hard, and if you're able to crack that exam, you are seen as successful, and there's no other way around. It is purely in binary terms. Either you are successful or you are failing. But these are social construct. If you see, there is no absolute reality in that. Let's understand this in better ways. As we discussed, success and failure are socially constructed concepts. All right. So here, what our society has described, what our society has created. If you are not crossing the line, you are termed as a failed person. But have you really failed? Forget about what society thinks of us. The amount of knowledge you have gathered throughout this process, the amount of resilience you have developed, जो आपकी हार्ड वर्क करने की एबिलिटी डेवलप हो गई है, that is unparalleled, unmatchable. ये आपको लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस पे, जो आप ये डिफिकल्ट टाइम को जो फेस करते हो, जो एबिलिटी आप डेवलप करते हो, बहुत टाइम पे आपको हेल्प करने वाली है. आर नॉट दीज थिंग्स आर अचीवमेंट? हाउ कैन यू टर्म योर सेल्फ एज अ फेलियर? You have gained lot of things जो आप otherwise नहीं gain करते. So I think we should change our paradigm of how we look at failures. Alright. So should you feel sad? Should you feel like you are a failed person? एक और थ्योरी हमारी बहुत फेमस थ्योरी है, लुकिंग ग्लास सेल थ्योरी बाई C.H. कोले साहब ने दिया है. What it says, अगर इसको हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, इट सेज दैट इमेजिनेशन ऑफ आवर अपीयरेंस फ्रॉम अदर्स आई. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े होके आप खुद को देख रहे हो,
If you see yourself as a successful person, ये आपका पर्सपेक्टिव नहीं है. दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, हाउ सोसाइटी सीज योर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड नॉट क्वालिफाई. सो वेन यू सी योर सेल्फ, यू लुक लाइक यू perceive yourself as a failed person. But this theory says that this is not your perception. जो आप खुद को देख रहे हो, that is the perception of the society. So in short, if you are feeling like a failed person, you are just letting the societal construct dictate your mental state. Don't you think this is not the absolute reality? These are just subjective things which have been framed by system, the society in this case. So rather focus on what you have achieved than focusing on societal construct which have made it very binary. Either you are successful or you are failed. There's no in between things. I hope I'm making some sense. थोड़ा सा ये आपको थोड़ा डिफरेंटली इसको एनालाइज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा. दीज आर नॉट ईजी टू गेट थिंग्स. थोड़ा सा फिलोसफिकल वे में जा रहे हैं हम. ऑल राइट. सो आई एम श्योर दैट अब आप खुद को फेलियर की तरह नहीं देख रहे होगे. एनीवेज, नाउ लेट डिस्कस द पाथ अहेड. आई थिंक आप या तो इफ you might want to continue in the journey or you want to take exit from this loop. For both of the cases, we'll analyze and compare with the cricket examples which I have given. I'm sure आपने थोड़ा बहुत कुछ इंटरप्रेट किया होगा जो इनिशियली मैंने सेम फोटो दिखाई थी. Now let's discuss. तो पहली फोटो है लास्ट नवंबर 2023 में. There was a huge setback for India. We lost in the finals. पूरे मैच, पूरे टूर्नामेंट में we were undefeated and we finally lost in World Cup final match against Australia. There was a huge setback. But time changes. The good thing about time is it changes. If you're working hard and consistently. इंडियन टीम ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी, बहुत थॉरली प्रिपरेशन करी उस चीज़ की. एंड देन यू कैन सी एक साल के अंदर वी वॉन T20 फाइनल, T20 वर्ल्ड कप. ऑल राइट. नाउ दिस photo justifies this created common sense which says that if you work hard, it always pays off. All right. So अगर इस बार आप you could not make it prelims stage से इस बार, so that's okay. Work on your mistakes. You'll have fair chances to bounce back stronger. You'll able to clear next year. Picture number 3 में बात करते हैं. This was the first time they reached to the semi-final, to the final stage in World Cup match, South African cricket team. But उनके लिए भी but they could not win the World Cup. Now, can you say, आप अगर इन दोनों एग्जाम्पल में कंपेयर करोगे, can you say that कि इन्होंने हार्ड वर्क कम किया था, इन्होंने ज़्यादा किया था? नहीं, you cannot say this. So this is the problem of structure. The problem is with the structure of the match. दो में से कोई एक जीतेगा no matter how much hard work they are putting in. For example, if 5 lakh people are appearing in prelims, out of this only 10 to 12K will qualify the prelim stage no matter what. उसके बाद तो और further stages पे और shortlisting हो जाती है. So my point is कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम में प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन और जो सिस्टम ने हमारे जो स्ट्रक्चर बनाया ना, ये इसमें प्रॉब्लम है, नॉट इन यू. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 5 लाख बच्चे इक्वल अमाउंट पे मेहनत करते, प्रॉपर अमाउंट में मेहनत करते, तब भी इसमें से 12,000 का ही सिलेक्शन होता. दैट डज नॉट मीन रिमेनिंग 4,88,000 पीपल आर unworthy and they are not deserving. You understand my point? So do not consider yourself as a failure. There's always a hope. There's always a hope to do better, but there's no guarantee out of it. Now, coming to this example, Rahul Dravid sir. You see, Rahul Dravid sir ne, if I'm not wrong, he has played 3 World Cups. तीनों में he could not win. I mean, he as in टीम इंडिया जीत नहीं पाई जब सब इन्होंने वर्ल्ड कप मैच खेला है. He took the retirement from the international cricket. All right. So even after that, he was able to contribute to Team India. So my point is, even if you are at this point of time taking exit from the UPSC journey, there will be enough opportunity for you to do good in your career, to good in your life,
to good everywhere else and contribute towards the nation building. All right, so these three examples are very relevant in our journey. I feel example one is if you are still into the journey, you have hope. If you work hard, you can get it. Example two, अगर आप if you are taking exit from this journey, you have a chance. You still have got chance to do good in your career, to good in your life. And from example three, what we can conclude is कि no matter how much hard work you do, you might not get the desired result because there's a problem of structure. These are the structural issues and not in any individual's hand. So keep working hard because you ultimately you have to stay to survive in this society only, in the system only. You're not going to change the system. We just discussed this, isn't it? All right. What was the conclusion of this? All these philosophical and sociological discussion which we had. I'm sure थोड़ा boring हो गया होगा, but that's okay. So failure is not reflection of your worth, but part of larger social constant, as we discussed through social construction theory हमने देखी और looking glass cell theory कूले साहब की देखी हमने. And secondly, so what you should do, see it as a stepping stone rather than a stumbling block. I hope I was able to change your perspective on how you see your failures. If that was the case, I'm glad. And thank you so much for your time and patience. Thank you so much. Bye bye. See you soon.